दफा हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा। प्यार को पहचाना एहसास है ये नया। सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। कभी दर्द सी कभी जर्द सी जिंदगी बेनाम थी। कहीं चाहते हुई मेहरबान हाथ बढ़ के थामती। एक वो नजर एक वो निगाह रूह में शामिल इस तरह बन गया अफसाना। एक बात से पहली दफा पा लिया है ठिकाना बाहों की है पना। सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। लगे बेवजह अल्फाज जो वो जरूरत हो गए। तकदीर के कुछ फैसले जो गनीमत हो गए। बदला हुआ हर पल है रहती खुमारी हर जगह। प्यार था अनजाना हुआ साथ में पहली दफा। ये असर अब जाना क्या रंग है ये चढ़ा। सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। जुबां है फीकी शाम से हुई ना तो से बात भी। बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें मोहब्बतों का मोल दे नींदों में
बन जा तू मेरी, तू बन जा बन जा बन जा बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। ख्यालों में जो तू हो तो बातें हूँ मैं अच्छी अच्छी करता हूँ, देखूं सुबह सुबह जो तुझे तो सारा दिन अच्छा है गुजरता। ये कैसी तेरी आरज़ू, ये कैसी तेरी ख्वाहिशें, तुझी से देखो मैं करूं तेरी ही फरमाइशें। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा बन जा बन जा बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। तेरी वफाओं का उजाला हमेशा मेरे संग संग चलता हो, तारे गिनूं क्यों रातों को मैं, मेरा तो कभी दिन ही ना ढलता। Thank you, ladies and gentlemen. Before we start the official program, just a few house rules. At the back, or where you came in from the entrance, the toilets are located at the back there. So if you need to go to the toilets, it's at the back. It's clearly marked for ladies and gents. There are three exits that I can see. One on there, one as you came in, and one is up here. In case of fire alarm, please go downstairs and we'll meet in the car park. In this juncture inside, the first thing you should do to find out if everybody has been accounted for when you get into the car park is look at your right now. If you look on the right hand side and see who's sitting on the right, and then look on the left and see who's sitting on the left. बस खाली वही दो आदमी के खोजे के तुम्हें कार पार्क में. If you can find them, everybody will be accounted for because everybody does that. For me, you don't look for me because I'll be home by then. I don't have anybody on my left or my right, right? So that's how it's going to be. If there is an alarm then, but hopefully नहीं रही. और पानी तो लगी चीज़ हारी आगे बहुत दिखे. The other thing, we are about to start the program. As I said, we can leave Fiji, but we can't leave the Fiji time. So we are a bit behind. But unfortunately, or fortunately, the bride to be and the groom to be are here for the engagement ceremony tonight. So we'll start the program in the next 10 minutes. Just an advice also, haven't seen a COVID tracer. Q code, is it there? Okay. It's outside there. Please make sure you trace it if you have your app. It is very important. अभी जो दौर अभी हम चल रहे हैं फिलहाल 2020 and 2021 has been really bad. So make sure get your tracer app because if something goes wrong, अगर जो कोई क्या खांसी से छींक लगाई थी और कहीं बीमार हुई तो सबके पकड़ाई दी. But hopefully it's not that way. And we should be prepared for it. It will help the government as well, help the country in sustaining the pandemic. So please, if you have an app, download it, or if you don't have it, just make sure that you have signed in or know who is around you, so that in case the Ministry of Health calls us, we know who are all there. Inshallah, we'll start the program in the next 5 minutes. That's what I've been told. We have the entree served first before Zainal, and then Monisha will make their way up onto the stage or the table, and then we start with the official program, inshallah. Ladies and gentlemen, for your patience, I can see that now the entree has been served. But anyway, keep enjoying the entree while you are about to witness the
engagement ceremony. We'll go along with the official program in the same token while you are having your own tray and enjoying the beautiful, delicious things that have been prepared. Okay, now we are ready for Zanon to enter. And Zanon will be entering with his family following him after. All his brothers and sisters, brother and sister-in-law, and the rest of the clan on the funnel. So, ladies and gentlemen, the entry of Zulfir Zainal Hassan. आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयान खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ मेरी खामोशियाँ है सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा 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 राहों में भी हर कदम मैं तेरे साथ चला हाथों में थे ये हाथ मगर फिर भी रहा फासला सीने में ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा तूने दिल से दिया जो दिया ना कुछ बोला ना कुछ तोला मुस्कुरा के दिया जो दिया तू ही धूप तू ही छाया तू ही अपना पराया और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है नहमदुहु व सल्लल्लाहु अला रसूल करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने हमें मौका इनायत दिया है कि आज हम इस पाक मजलिस में शिरकत फरमा हुए हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला से यही दुआ है कि आपका आना आपका उठना बैठना फिर वापस सही सलामत घर जाना अपनी बारगाह में वो मंजूर करे और जिस मकसद से हम यहाँ आए वो भी उसमें भी बहुत सारी बरकत दे और इसी तरह ये दोनों आज इंगेजमेंट के बाद फिर अपने शादी की ओर कदम बढ़ाएंगे और फिर बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं इनका जो ये निभाएंगे हम अल्लाह सुब्हान व तआला से यही दुआ करते हैं कि इसी तरह खुश और खुर्रम रहे जैसे कि कभी भी एक प्रोग्राम को हम जब आगाज़ करते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला का जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी होता है और जिस प्रोग्राम का आगाज़ हम अल्लाह सुब्हान व तआला का जिक्र से ना करें तो अधूरा सा रह जाता है तो आज भी इसी तरह हम करेंगे और ये अंजाम भी इंशाअल्लाह दुआ के साथ देंगे तो हम पहल तो ज़ीशान मोहम्मद कंवर से गुजारिश करते हैं कि वो आकर कुरान तिलावत से इस बार मजलिस को आज शुरुआत करें इंशाअल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الذين من قبلهم قبيلا ذاقوا ولا أمرهم ولهم عذاب عليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان
بالإحسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون جزاك الله जज़ाकल्लाह खैर ज़िशान मोहम्मद कमाल बड़ी बेखूबी से आपने कुरान तिलावत की तर्जुमा की और इंशाअल्लाह यही दुआ है कि आप इसी तरह और भी कामयाबी हासिल करें। ये दोनों को देखकर जुल्फिया ज़ैनल हसन और मुनीशा कमाल को देखकर ये शेर याद आता है कि चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, आज आए हैं ये दोनों मिलने को बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। Ladies and gentlemen, we are here for the engagement, or should I say the legal ceremony of Zulfi Zainal Hassan and Munisha Kamal. As we all know, Munisha is the youngest daughter of Brother Muhammad and Sophia Kamal, and Zainal is the son of Khalid and Roshin Hassan. I know Zainal is an LA man or Mombasa man, and knowing Munisha's family, they come from Lotuga. So it's a good mix, L and L. LA Lotuga bhi hai, LA Mombasa bhi hai. Anyway, yes, and if you look at them, the weddings are celebrated on earth, but they are made in heaven. But people tend to forget कि आसमान में खाली weddings नहीं बने हैं, lightning भी हुए, ठंडा भी बने हैं, तो ये सब की संगे आवे शादी के साथ साथ. So we will hope it does not affect them. It will be some tipsy-turvy chance in the life, but hey, we have to go through it as we can. Now I will get into the program. I know I've been waiting for some time now. I do apologize on behalf of the host. As you know, a beautiful venue, a beautiful site. So why not enjoy the whole night away and with good food, I'm assuming. So stay with us and we'll have you entertained. At the same time, we'll finish the program as soon as we can. Now I'll ask Zayed Deen Shah to introduce Zainal. Zayed Deen Shah is the brother of Zainal, so Abdullah would like to know more about Zainal, so why not? Zayed Deen Shah, would you please introduce your brother to us? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I have been given the opportunity and the privilege to introduce Zainal Zulfi Hassan. He is my brother-in-law. Those who don't know me, I'm Zahid, Zainal's only brother-in-law. So before I say anything further, I would like to congratulate the couple on the precious occasion. Zainal, he is the younger son of Khalid Hassan and Roshin B, and also the youngest sibling. Unfortunately, Zainal's mother, Zainal's nani and Zainal's dadi is not here because due to COVID-19 restrictions, they cannot travel from Fiji. But all their love and dua is with them, to the couple. And Zainal has two older siblings, Altaf and Sharufa. Sharufa, she is my wife. Zainal has completed his tertiary education at Manikaw Institute of Technology, and now he works as a LBP builder at Two Men's Construction Limited. Zainal is a very soft-spoken, kind-hearted person, and the youngest, getting married before the eldest. Once again, I would like to congratulate the couple on this special day. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you both, long life, happiness. And at last but not the least, I wish you both tons of wonderful times, togetherness today and the years to come. Welcome Munisha to the Hassan family. Keep smiling always. And if there is any problems, please do let us know if we can sort it out. May God bless you. Thank you.
Jazakallah khair, Zainuddin Shah, the brother-in-law, I think, of Zulfir. When he said the younger one is getting married before the elder one moved chekali same time Ghana boli laga. But Ghana se kaam nahi chali, kali Ghana bajaye kaam nahi chala. But anyway, yeah. Hopefully, inshallah, will be one day that we will be celebrating your part of it as well. So now it's only good that we get introduced to Monisha. And Monisha Kamal is one soft-spoken girl as well, I can say, because when I first met her, I know her from a long time, but yeah, as I said, she is one girl that would listen to instructions pretty well. And I think Zainal would be able to cope up with whatever she has to dish out, because she's very soft-spoken as well and takes things at the stride. So let's get her introduced by Zoya Israr and Zishan Kamal. So both will be introduced. There's two people introducing Monisha, so she's very lucky. Zoya Israr and Zishan Kamal, brothers and sisters. Assalamu alaikum. First of all, I wanted to welcome you all to my little sister's engagement. My name is Zoya and this is my little brother Zishan. And we have been given the privilege to introduce to you all Monisha Kamal, or better known in our family as Momo. Momo is the middle child in our family. She is the strong, independent daughter of my Abu, Mr. Muhammad Nasim Kamal, and loving and caring daughter of my Mummy, Mrs. Sophia Kamal. She is also the granddaughter of my Dada, late Muhammad Kamal, and my Dadi, Badrunisha. My Dada and Dadi were originally from Razakpur in Matoka. Moma is also the granddaughter of my late Nana and Nani, Aslam and Ainonisha of Dalwa. I know for a fact that our grandparents, who apart from my Dadi sitting right here, would have loved to be part of this day. If I had to describe my little sister, I would honestly say that she is absolutely amazing. She is all a big sister could have asked for. She is my best friend, especially at awkward events. She has always been by my side, no matter what, when I've always needed her. I now think back and realize how lucky I am that Allah Pak gave me a little sister to grow up with. Life without you, Momo, would have been so boring. I would have had no one to play teachers with, no one to sing karaoke with on PlayStation 2, no one to have deep midnight conversations with at midnight, and no one to experience our childhood together with. I have so many favorite memories with you, Momo, but I guess my favorite memory with you is when we had a road trip. I think it was from Auckland to Napier, and it was a long drive, and halfway through Momo got scared. It was getting dark and she asked my Abu, I was still in New Zealand. And also when we used to play, I guess our adventures when we were the home alone. So a bit about Momo. Momo is ambitious and driven. She has always had a passion for business, whether it's working on new recipes for her YouTube channel or starting a new business for wedding decorations. The decorations you see around you, from the lanterns, so if you see the lanterns on the centerpieces, right down to the cupcakes you might have seen on the sweets table, were all done by Momo. Momo is creative, therefore having a builder in her life is absolutely perfect. So Zainal here, get ready for a lot of do-it-yourself projects. It is so hard to believe that the little girl that used to love the TV show High Five for Kids is now sitting here getting engaged. I don't tell you this often enough, but I am so proud of the incredible person you've become. You will know what I mean when Zishan takes it up. Assalamu alaikum. I am the younger brother of this lovely lady right here. Momo has always been the social butterfly of the family, meaning that she's always been doing do-it-yourself challenge or even dancing. But one thing for sure is that I love my sister no matter what. Momo was born and raised in Auckland and went to uni and got her qualification in social science and now works at a UE Insurance as a client advisor. If you need a quote
for insurance, but that's it. Today feels like I'm gaining a brother, and it does feel like it. It's hard to see someone you love so much. It's hard, yeah. You go into another family. Sorry, I'm getting over object. Yeah. That's it. I think what Zishan was about to say is that Zainal, we're so excited for you to be part of our family, and we hope that you're just as excited to be part of ours. I know you're going to fit in, well. Yeah? Okay. Look at the chocolate. Can we buy some Papa Tea? Papa Tea. Thank you, very well said, and yeah, summed up, and Momo, as I told you, yeah, you do look pretty, and all the attributes, whatever they have said, does compliment on what you are, and that I can get into as well, and Zainal, I think you guys make a very good couple, and let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He keeps smiling as you have started today. Now we'll do the legal bit, which is the legal ceremony. And then we'll go ahead and do the cake cutting and whatever, and come up with the conclusion, which is the dua, inshallah. Ladies and gentlemen, it is good to have one person doing the whole thing, right? You don't have a change of voice, master of ceremony, and then I become the marriage celebrant. I do a lot of things for the public, so alhamdulillah, I hope Allah gives me more strength to do more of this, because it is something that I've always cherished. My dad used to do it, so I keep continuing the trend from the tradition of helping people out. But let's get into the official part of it. Friends and family of Zulfi Zainal Hassan and Monisha Kamal, we have come together to witness and celebrate the marriage of Zainal and Monisha. Everybody calls you Zainal, because usually people call you by the first name, right? It's okay? Marriage is a gift of creation and intends that the husband and the wife should be united in heart, body and mind, and find in the union the fulfillment of their love for each other and the stability necessary for family life and the care of children. Marriage, therefore, involves a serious and lifelong commitment in mutual love and joy to seek each other's good in a union of strength, sympathy and delight. Zainal and Monisha, we rejoice with you. We are glad to join with you in the celebration of your marriage, to witness your vows and to wish you joy in your life together. Zainal and Monisha are making the most important and sacred commitment that two people can make to one another. Now, in the presence of this gathering, I will ask you both of your commitment to each other. Zainal and Monisha, have you come here freely, without any, and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Yes. Yes. Alright, so there is no koi push and munira, na? Ki wali shadi karo. Apan khushi se marzi se kare. That's good. That's nice to hear. Now the vows exchange. So turn around, look at each other. I'll try to fit you in the back. Thank you. Alright, somebody there. Okay? Alright. हाथ पकड़ो. Alright, आँखें में ताक के दिल में उतरो. थोड़ा टाइम लगी सीखते ही सब चीज, but it is important. You know, go there. Okay. Hold your hands, look in the eyes. I will say, you can repeat after me. Huh? This person, here present, to witness that I, Zulfi Zainal Hassan, take you, Monisha Kamal, to be my lawful, wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, as long as we both shall live. To this end, I pledge you my word. Good. Now it's your turn. Thank you, Zainal. I must congratulate you. This is the first time I've seen somebody getting emotional in saying the vows. That means you are understanding the vows, which is very good. Congratulations. Okay, here we go. Look at him in the eyes. I call upon these persons. I call upon these persons Present here. present here To witness that I.
to witness that I, Manisha Kamal, Manisha Kamal, take you, take you, Lutfi Zainal Hassan, Zulfil Zainal Hassan, to be my lawful, wedded husband, wedded husband, to have and to hold, to have and to hold, from this day forward, from this day forward, for better for worse, for better and for worse, worse, for richer for poorer, for richer and poorer, in sickness and in health, and in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, as long as we both cherish, as long as we both shall live. And to this end, And to this end, I pledge you my word. I pledge you my word. Thank you. Well said. Now, could we have the ring bearers, please? Muzammil, Munaf, and Ayat, please. Good boy. Okay, now take the ring, place it on the fourth finger on the left. Place it there. Okay, don't put it in. Look, here, Akim Taktero. I give you this ring as a token of my love, of the vows we have made together. May it forever signify the love we have for each other. Thank you. Now you may slide the ring right through. Okay. Thank you. Now it's your turn, Manisha. Place on the fourth finger on the left. Yeah. Just place it there. Don't put it in through. I give you this ring. I give you this ring as a token of my love. As a token of my love. And as evidence. And as evidence. Of the vows we have made. Of the vows that we have made. Together. Together. May it forever. May it forever. Signify the love. Signify the love. We have for each other. We have for each other. Thank you. Now just slide the ring. Beautiful. Alright, thank you. Now the wedding rings which you have both given and received serve as a symbol of the vows you have just taken. They are outward and visible signs of the inward and invisible love which binds your hearts together. As rings are without edge or seams, they have no beginning and no end, so they symbolize the perfection of love that will endure. Now by the authority vested in me as a marriage celebrant appointed under the law of New Zealand, I therefore pronounce you to be husband and wife. Congratulations, every happiness to you both. Agar jangan menggora hotak dan hotak dia di kiss the bride. Baru lari hitam boleh. हमने सब तो बात बोले बिना मरिया का बोल दिया. Now I'll ask you both to sign the register and the two witnesses, please, the two dates, Bhai Kalal and Bhai Hassan. Would you please come forward as well? जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं, सारी हद मेरी अब मैंने तोड़ दी, देखकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए.
All right, now, as I usually say that the wife or the person in charge of the house usually keeps all the documents. So this is the bachelor certificate that he has lost today, and I'm giving it to you. Congratulations once again to both of you. May you have many more happy years in your life. Thank you. How about get down? You need to guard the light. Today was chosen by you both to begin your life together, and love is the reason why you both will give with all your hearts for the good of each other. Love is the reason that together you will become one in hope, one in believing in life, and one in sharing the coming years. Now, remember this, the first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. The first to forget is the happiest. So make sure you follow those rules in your life, and don't marry one person. You never marry a person, it says. You marry three. And people will say, what? The person you think they are, that's the first one. The person they are, and the person they are going to become as a result of being married to you. So that's the reason why we say we marry three people, okay? So what they were, and what they are, and what they will be after getting married to you. Married life is to be led as friends. I would usually say this. I always say this in the weddings. Abhi, you knew each other for a while, right? तो कुछ काम लगे 2 बजे सवेरे अगर तुम्हें भूख लगा अभी मुनिशा तो तुम रिंग करेगा जानल के जानल तो फिश एंड चिप्स लेते हो दुकान से जानल बेचारा छोड़ के पल्ला भर के खुला नहीं कोई बात नहीं भागते आई फिश एंड चिप्स खरीदी लाइक तुम्हें दे दी है ना बट शादी के बाद तुम बोलेगा जानल कहाँ पे से लौटा तो लेके आ जाना फिश एंड चिप्स उस साइड 11 बजा रही 2 भी नहीं बजा रही अरे बहुत थक गया बॉस बहुत दौड़ाई समय काम पे राइट तो वो नहीं लाई बिकॉज़ योर हस्बैंड बिकम्स अथॉरिटेटिव तो पास पावर है क्या हमारा हस्बैंड है हमारा वाइफ है तो हम नहीं देगा चल जाए गुस्सा ही नहीं बट जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या जब तो फ्रेंड्स रहे mates रहे then it becomes hard so I always say that make sure that you live your life not as a married couple but as friends that will last longer right every time is a friend is now remember when you came in I asked you to sit on the right and he was to sit on the left now you will change you will sit on the left and he sits on the right. People ask, "Kaha ye log aise kar rahe hain?" तुम बताता नहीं बोले? हम बताता कहाँ है? Because they say you are closer to the heart now once you are married. That's why you sit on the left, the ladies. But the other reason is when you gonna walk in Westfield, बाद में तुम जब देखेगे Westfield में तुम चलेगा, तो तुम जब left side चलेगा, right मनीषा? बेचारा लड़का right side चली, तो तुम उसके से पकड़ेगा ना, चले तुम Westfield में हम देखें दूसरा जान जाए वो right है, लोग बात सुनी नहीं. जब तुम्हें कोई अच्छा दुकान में दिखाई तो तुम्हारे जेब में हाथ चला सेम टाइम राइट बैक पॉकेट में राइट इजी है बैक पॉकेट में से कार्ड निकालेगी तब भी तुम लेफ्ट साइड लेंगे राइट ना जान गया राइट कीप दैट इन माइंड ऑलराइट सो वी आस्क देम टू सिट डाउन एंड वी विल पुट ऑन कटिंग द केक फर्स्ट आई थिंक वी विल डू द केक कटिंग फर्स्ट जाने कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर ना तुझको पता ओ बनाती है जो तू वो यादें जाने संग
रुक चले इन्हीं से तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर ना तुझको पता चेहरा क्यों मिलता तेरा यूं ख्वाबों से मेरे ये क्या राज है कल भी मेरी न थी तू ना होगी तू कल मेरी आज है तेरी है मेरी सारी वफाएं वफाएं तेरे ही लिए सारी दुआएं दुआएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ ले जाए तुझे कहाँ ले जाए जाने कहाँ ले जाए तुझे कहाँ ले जाए जाने कहाँ ले जाए मुझे कहाँ ले जाए जाने कहाँ ले जाए मुझे कहाँ मन बावरा हुआ जा रहा कैसी लगन ये लगी मुझ में कहीं भी मैं नहीं तू ही तू है मुझ में हर कहीं मन बावरा हुआ जा रहा कैसी लगन ये लगी मुझ में कहीं भी मैं नहीं तू ही तू है मुझ में हर कहीं सजना वे रब्बा तू ही अपना है देखे मेरे नैना जिसे तू ही है वो सपना वे सजना वे रब्बा तू ही अपना This happens when after marriage for some time. शादी करने के बाद जब लोग थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं ना अभी एक बुढ़ा बुढ़िया पीजी के बाद रोज समझा के बाहर चाय पिए बैठ के गार्डन में दिन भर काम कर ले तो बैठ के चाय पिए तो बरंडा में बैठा रहे और देखा करे रास्ता चले सब कहीं जाए तो यूजुअली 60 इयर्स की शादी के बाद तो खटपुट तो रहते हैं तो बुढ़ा बुढ़िया अपने बात करें तो रोज समझा के लोग देखे एक मुर्गा आवे रास्ता किनारे खड़ा हुए थोड़ा आगे आवे ताके लेफ्ट ताके राइट फिर राइट ताके आपको मोटर नहीं है पीछे चला जाए तो फिर मुर्गी के लेके आवे संगे क्रॉस कराए देगा तो रोज लोग इसी देखे रहे तो बुढ़िया बताई बोले
ताको बोले तुम थोड़ा देखो सीखो बोले मुर्गा से सीखो देखता बोले कितना अच्छा से अपन मुर्गी क्रॉस कराए संगे संगे तुमने अगर जो बताया थी हमें क्रॉस कराए तो हमें लात मार के आगे कर दी मोटर के बट देखो बोले सीखो ही मुर्गा से तो बुढ़ा भी कमती नहीं रहा बुढ़ा बोले हे बुढ़िया अच्छा से देखो तुम्हारे जना आगे आखी टेस्ट कराए वहाँ स्पेक सेवर्स में अच्छा से देखो रोज दूसरा मुर्गी क्रॉस करेगी anyway so we're getting ready for dinner but before that it is only right that we do the dua and vote of thanks. I also would like to, on behalf of the host, thank you all for being here tonight. It has been a challenging time for everybody. I know most of our families members are trapped overseas. They cannot make it. When we have such weddings, we used to have people of numbers of 400 to 500 people in a wedding, or even more than that. But nowadays we just have to make do with whatever numbers are around. And you are the chosen ones here tonight, so you should be thankful that you have been invited. If you are, you must be on the list, top list of the people who are hosting the show tonight for you. So once again, on behalf of my brother Kamal and his wife, would like to thank you all for being here tonight. Hope you enjoy the evening, and don't forget before you go, make sure you have a lovely feed. I'll ask Salman Isra to please come forward and move a vote of thanks, the brother-in-law of Monisha. Hey everyone. Ladies and gentlemen, good evening to you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I've been given the privilege and honor to read out the vote of thanks for tonight's legal ceremony and engagement. For those of you who don't know who I am, my name is Salman Isra. I am the brother-in-law of Monisha Kamal. First and foremost, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for making this day possible, for uniting two families together on this beautiful day to witness the engagement of Momo and Zainal. Second of all, I would like to thank everyone here today, all of you, for making this day possible, for taking out time of your day and coming to this event to witness this engagement. Thirdly, I'd like to congratulate Momo and Zainal on their engagement. I mean, they've done a lot of work in the background. The frame, you guys all walked past the Photoshop, the photo shoot area. They were all pretty much part of that and involved in making all that, so congrats on that. Before I go through the names, please forgive me if I butcher any of the names here. So on behalf of Monisha's family, I would like to thank Ishrar and family, Mohammed Naseem Kamal and family, Afrin Bubu and Shamil Bhaiya, Feroza and family, Muzaffar Munaf and family, Arvin uncle and family, and on behalf of Zainal's family, would like to thank Johnny, Mama and Mami, Razia, Muzaffar, Zahideen, and of course Zainal's brother Altaf. On behalf of both families and everyone, we'd also like to thank Paradise Catering for the delicious food that we are about to have tonight, Naz Auntie for helping along with the decorations, and as well as all the other people that involved late last night for helping with all the decorations and prepping the venue to ensure that it's ready. And of course, I'd also like to thank our special MC here, Mr. Ayaz Khan, Shafraz and Suhail for the videography and photos, and also for everyone that spoke today. A very special thank you to you as well. I'd like to pass the vote of thanks to Momo and Zainal to say a few words. Assalamu alaikum to you all. I'd like to give special thanks to my incredible parents for their ongoing support throughout this engagement. I'd firstly like to thank my dad for initiating this marriage, taking the first step in an attempt to officialize our relationship and to join both families into one. And of course, not forgetting my amazing mum, who has continuously given us love, care and support, the main lady who kept everything under control and ensured everyone was happy. I'd then like to thank my sister Zoya and brother-in-law Salman Bhaiya, also together known as the headquarters within the Kamal family. Thank you for flying from Wellington to suss out everything. And then of course, not forgetting my Putululu, also known as my little brother, for helping out in every way possible and keeping me together mentally and emotionally. Z, don't ever forget, we will always be food buddies, and
Don't worry, after getting hitched, every time biryani is made, you'll be invited. And I bet she thinks I've forgotten, but I'd like to also thank my little cousin Neha for helping out so much, being my little helper, finding everything I needed for my special day. I'd like to pass the mic down to Zainal to do his share. Sorry guys, कुछ लिख के तो नहीं लिखा है, but thank you mummy, mama, Razia, brother, आप लोग काफी help करा हमारी engagement में successful करने के लिए, and Salman, thank you as well, MC, and my brother as well, thank you Altaf for being a good DJ and a light, and yeah, enjoy the food, thank you. So before we conclude the vote of thanks, I would just like to say on behalf of Monisha's family, Zan's family, if we've missed anyone's names, please forgive us. You guys know who you are, we all know who helped. Forgive us if we missed anyone's names. Thanks to all of you for coming once again. Please enjoy the dinner. And we all look forward to seeing you all very shortly for the nikah and the walima. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarfaraz, thank you for the job well done as usual, and I'm taking this opportunity to market you and say that if anybody books with Sarfaraz tonight and if you mention my name, he'll give you a discount. He has to, he's got no choice. And DJ, Tumar I think, yeah, as I said, I usually love to have a good sound quality when I do speak, because I want to see that my voice is enhanced and people pay attention when I talk. And I think you have done wonders, good job. Even though it's the first time we have met, but I know you have got a long way to go. The other thing I must say, I know that you can do some performances for us tonight. If I'm not wrong, I've been told you are always on TikTok. What do you want TikTok? TikTok. I just check TikTok. The last time I saw somebody on TikTok was that girl in Fiji who flooded with that pani mein TikTok. Yeah, anybody saw that? तो वही चीज टिकटॉक है तुम जुरान सकता करे okay we'll leave it oh okay अच्छा एक और नाम पता लगा तुम्हारा पता है दी डीजे का नाम पता है कि स्टेज का नाम पता है okay stage name is Yo-Yo Khan देखा सब कोई जाने तुम्हें जो जाने फॉलो करे काफी फॉलोअर्स है तुम्हारे anyway guys I don't know whether you'll give us a performance or not here tonight but maybe because of the public demand and I will make sure that I promote you to the next occasion I get. But I must now ask Brother Zayed Deen Shah to say a dua, and inshallah we'll come to the conclusion of the program. Thank you once again, ladies and gentlemen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم أجرنا من النار يا خالق والنار يا غفار رب العالمين हम सब की कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ अता फरमाना या रब्बिल आलमीन इस मजलिस में जितनी भी जन आए हैं रब्बिल आलमीन नेक इरादी मुरादी पूरी नसीब अता फरमाना या रब्बिल आलमीन इस जोड़े को कायम करने के लिए अपनी तौफीक नसीब अता फरमाना या रब्बिल आलमीन इन जोड़ों को प्यार मोहब्बत तफाक से रहने की तौफीक नसीब अता फरमाना या रब्बिल आलमीन हर एक मोड़ में मुसीबत से बला से बचाना गफूर रहे या रब्बिल आलमीन इन जोड़ों को क़यामत तक सलामत रखना गफूर रहे या रब्बिल आलमीन या रब्बिल आधा ईमान गफूर रहीम या रब्बिल आलमीन या गफूर रहीम इन जोड़ों को सलामत रखना रब्बिल आलमीन या रब्बिल आलमीन या रब्बिल आलमीन जितने भी जन यहाँ बैठे हैं रब्बिल आलमीन परिवार इस तरह जहाँ कहीं फौत हो चुके रब्बिल आलमीन
इन सबको पूरी पूरी मगफिरत नसीब अता फरमाना। कब्र में नूर रहमत से भर दे, कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे, जन्नत की ठंडी हवा, जन्नत की खुशबू, जन्नत की रोशनी नसीब गफूर रहीम। या रब्बिल आमीन हम सब की ईमान वाली मौत नसीब अता फरमाना। आखिर वक्त पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी रहे, गफूर रहे। ईमान वाली मौत नसीब अता फरमाना, ईमान के साथ मौत नसीब अता फरमाना। कब्र की तैयारी करने की तौफीक नसीब अता फरमाना। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाना। रमज़ान के महीना कदर करने की तौफीक नसीब अता फरमाना। वक्त पे सदका ज़कात अदा करने की तौफीक नसीब अता फरमाना। हलाल कमाने हलाल खाने की तौफीक नसीब अता फरमाना। हराम चीज़ों से बचाना रब्बिल आमीन, चोरी मक्कारी से बचाना गफूर रहे, ग़ीबत से बचाना गफूर रहे। या रब्बिल आमीन हम सब ने नियत की है उस बस्ती में सैर करने की जिस बस्ती में तेरी रात दिन रहमत बरसती, गफूर रहे। या रब्बिल आमीन हम सबको हज करने की तौफीक नसीब अता फरमाना, किबला शरीफ के तवाफ करने की तौफीक नसीब अता फरमाना, हज़रत अस्वाद को चूमने की तौफीक नसीब अता फरमाना। या रब्बिल आमीन, या रब्बिल आमीन, या गफूर रहे। आखिरी वक्त पे रब्बिल आमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से सब कौसर पानी की पीने की तौफीक नसीब अता फरमाना। या रब्बिल आमीन, या रब्बिल आमीन जितनी दुआ मांगेंगे कबूल अता फरमाना, और जितनी दुआ मांगने से रहेंगे कबूल अता फरमाना। इस दुआ को अपने बारगाह इलाही में कबूल अता फरमाना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदी व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakallah khair. Now, I was given to finish the program at 8:30 and I think I've done just that. तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ। ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। समझो जरा समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा। जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार ना होगा दोबारा। दिल में तेरी जो जगह है उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला। धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान।
पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ये दिन है प्यारे ही रिए जो साथ हमने जी लिए, जाना नहीं मुंह मोड़ के, अखियों में पानी छोड़ के। ये पानी आग लगावे, ये पानी आग लगावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तेरा ख्याल हर घड़ी है आदतें मुझे तेरी, एक दिन जो तुझसे ना मिलूं पागल के जैसा मैं फिरूं। कोई रुत ना मुझको भावे, कोई रुत ना मुझको भावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के। छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां
लगा तो छुपा के रखा आँखां ते सजा के तूने मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है तरसती है निगाहें मेरी तकती है राहें तेरी चाहिए पनाहें तेरी ये कैसे मैं बताऊं तुझे सोती नहीं आंखें मेरी कटती नहीं रात मेरी ढल नहीं जाते पल नहीं जाते डूबती है सांसें दिल ऐसे भर जाते जाते हुए लम्हों को पास बुलाता है थोड़ी सी भी दूरी दिल सह नहीं पाता है सब है दिखावे झूठे पहरावे एक ही कदम